So the question today we are going to discuss is what is the meaning and importance of brahmacharya? Brahmacharya is included. This word comes in Bhagavad Gita also, in Patanjali's Yoga Sutra also. I thought it would be important if we know the exact meaning and understanding of this word. First, I request students to kindly unmute and share their views. Please unmute Tarana or Vibha or Brinda. What do you think? Good morning, sir. Yes. Sir, is mentioned in Bhagavad Gita, both and Bhagavad Gita and Patanjali, Brahmacharya is like renunciation, also means the courage. The Okay. courage. Yes. So, and celibacy for certain years or the expected outcomes we need from Brahmacharya. That's all. Okay. Thank you, Tarana. Vibha, Brinda. When our intellect is not driven by sense organs, we can say it is brahmacharya. We have the discipline over ourselves. We can able to control our sense organs, then it will be brahmacharya. And it is very important in achieving anything. Self-discipline will be important in the path of yoga to achieve higher states. Yes. So Vibha says that it is related to all the sense organs, and it is very important in achieving anything in life. Vibha, what do you think? Which path of yoga, brahmacharya, would be very important among the four paths of yoga? Raj Yoga, but I think every path of yoga will require brahmacharya. Okay. Okay. Brinda? Sir, one who studies Brahman, who is aware of everything and wants to pursue higher knowledge, will also be, that practice will also be called brahmacharya. Being aware all the time is also brahmacharya, I think. Being aware all the time. Okay, so this is, very interesting. With yoga especially, one word comes and we ask three people and all three tell a different meaning. That is why such discussions are very important, and I'm sure people will bring many more perspectives here. Sandeep ji, you want to share your views? Please unmute. Sanjeev ji, yes. जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ऐसा लेते हैं कि जैसे दिनचर्या है। दिनचर्या सारे दिन का आपका कार्यक्रम, रूटीन जिसे बोलते हैं आमतौर पे हम। तो ब्रह्मचर्या कहते ही ऐसा लगता है कि ब्रह्म से रिलेटेड कोई प्लान है, करिकुलम है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्म क्या है, पहले इस पे विचार कर लें तो उसकी चर्या समझ लें। और जैसे ही ब्रह्म की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में जो आता है वो पूरी सृष्टि, कण कण आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम पूरी सृष्टि, पूरे कण कण में अपनी चर्या की बात कर रहे हैं या सबकी चर्या की बात कर रहे हैं, तो सबकी चर्या की बात तो सामान्यतः शायद नहीं कर सकते, पर अपनी चर्या की बात कर सकते हैं जो कि ब्रह्म से रिलेटेड है। सामान्य अर्थों में ब्रह्मचर्या को हमारे लस्ट और काम से रिलेटेड चीजों पे कंट्रोल बोलते हैं, सामान्य हिंदी के अर्थ में या संस्कृत के अर्थ में कहते हों मे भी। पर मेरा ये सोचना है कि व्यक्ति के रूप में जब हम अपने
तरफ आते हैं, अगर हम अपने आप को ब्रह्म की तरह देखते हैं, यदि हम ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, तो हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। और जैसे ही हम अपनी चर्या को सही करते हैं, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने रोजमर्रा के काम काज को सही करते हैं, तो लगभग सारी सृष्टि में ऐसा ही हो रहा है या हो सकता है, ऐसा महसूस कर सकते हैं। अब हम अपने अंदर क्या चीजें सही करें या किन चीजों को व्यवस्थित करें, सही करना शब्द अच्छा नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो गलत ही नहीं होता, ये बहुत नैसर्गिक भी है। हमारे अंदर भी जो गुण हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं। पर उन गुणों को, उन संस्कारों को यदि हम गहरे में देखेंगे, समझेंगे, तो हमारी चर्या और अच्छी हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि चाहे ब्रह्म की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, संपूर्ण विश्व की बात करें, चाहे व्यक्ति की बात करें और करने से संबंधित बात करें, तो अगर मैं एक-एक चीजें बताऊं कि ये करना चाहिए या हम समझें कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कल्याण की बात सोचनी चाहिए, प्रेम की बात सोचनी चाहिए, इससे बहुत बहुत आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जहां कहीं भी हो रहा है, उसको बिल्कुल तटस्थ भाव से, एकदम सम भाव से, योग के मूल मंत्र की तरह समत्वम, हर जगह समता से बस उससे देखें, ध्यानपूर्वक देखें। और जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, तो मोटी तौर पे इसका मतलब हुआ कि हम समझ रहे हैं। और जब हम समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो नैसर्गिक प्रेरणा है, हमारे अंदर जो संस्कार हैं, हमारे विचार हैं, हमारे ये संस्कार को हिंदू और मुस्लिम वाला संस्कार न लें। संस्कार मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो विचार आते हैं, जो प्रेम है, दया है, करुणा है, या सुधार है, या विस्तार है, और आगे की तरफ बढ़ने वाली जो क्षमता है हमारे अंदर, वो अपने आप ही काम करना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल नैसर्गिक है। ऐसा कि आप किसी सिस्टम को उसके प्रॉपर वे में काम करने के लिए छोड़ दें, चलने दें उसे शांति से। तो सबसे बेहतर तरीका है साक्षी भाव, शांति से बैठकर हम देखें, और हर चीज को, किसी चीज पे कोई नियंत्रण, कोई अंकुश, कोई और कोई पुशअप की जरूरत भी नहीं है कि आप बहुत काम करें, कुछ नहीं करें। और इसका सबसे आसान तरीका है योग। योग के अष्टांग मार्ग तो हैं ही, पर और सामान्य तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है तो बस शांत हो जाए, शांत चित्त से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद करें और सारा ब्रह्मांड आपके सामने होगा और चर्या तो शुरू ही हो जाएगी। ये इमीडिएट मेरे अंदर जो विचार आ रहा था मैं वो बोल रहा हूँ Yes. शास्त्रों के हिसाब से, और आप लोग ज्यादा समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, तो शायद और बेहतर बता पाएंगे। और आपने पहले ही मुझे पूछ लिया तो मैं थोड़ा और फंस गया। दूसरों की बात सुनकर थोड़ी बात समझ में आती है, तो और कुछ सोचने समझने कहने का मौका मिलता है। नहीं धन्यवाद। संजीव जी, मुझे लगता है आपने बहुत ही व्यापक व्यू में और बहुत ही सुंदर तरीके से दिनचर्या, ऋतुचर्या की तरह आपने ब्रह्मचर्या का एक व्यू बताया। और इसमें दिस इज एक्चुअली, अगर आप भगवत गीता में भी देखें तो आई थिंक दैट देर इज ए सिमिलर काइंड ऑफ व्यू विच वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? Good morning, sir. Yes, Gandhi sir, yes. Yes. So earlier, so we used to, as a students, so you have to follow the. Elders used to say you have to follow the brahmacharya. So we all used to think that we should be follow the austerity and the good manners, and not indulging in marrying or sexual indulgence. That's what we thought earlier. So we thought it's a very difficult to go into the yoga because we have to follow the brahmacharya. So later, as we read and proceeded, the brahmacharya is not marrying or not leaving the house or going to the
like become like a sage or yogi. And being in a grihastha, we can follow the brahmacharya. Brahmacharya. So that is everything in limited, disciplined life. And even after marrying also, the sexual life should be limited, and you should not indulge more, and you should not think of other women or other men as a woman, and a disciplined life, and getting by doing like that, so, and following the meditation, you will get the what you known as the Brahma Gnana. So that's what we thought later. Thank you, Gandhi sir. Gandhi sir says that it is overall discipline in life, and with that, because the Brahma Jnana comes, this discipline is called as Brahmacharya. Wonderful. Anybody else? Okay. So if there is no one, then we will go to the traditional references. So one important thing, is that Patanjali puts Brahmacharya into one of the yamas. So it means these are the very pillars on which the whole Ashtanga Yoga stands. The path of Raj Yoga, especially the path of Raj Yoga, is a path where, the principles, the high moral values are the core. If they are not there, Raj Yoga cannot stand. And in that, one of the pillars is Brahmacharya. Literally, if you look at the text, it translates it as celibacy, regulation of sense organs. And Patanjali also, after describing yamas, he also describes the importance or the fruit of following that yama for a long time. For Brahmacharya, Patanjali says, Brahmacharya pratisthayam viryalabha. The practice of celibacy leads to great enhancement of energy. Now, to do anything, even to get into an asana, remain steady there, or perform pranayama, and then to control your mind by dharana, dhyana, samadhi, definitely you need a lot of energy. If you are restless, if your energies are going haywire, you will not be able to grow. So we, with an open mind, trying to approach these scriptures, we see that the Brahmacharya is something that has to do with my behavior. And in that behavior, similar behavior that are coming in those lines are non-harming, telling the truth, non-stealing, and asteya means not non-stealing. Those kind of aspects, they come. In among them, one of them, Patanjali says, is Brahmacharya. It means definitely it is an activity which, yamas usually put brake on the animal tendencies through which the energy tends to lose. So by being violent, I lose my energy. So to put a brake there is a principle of ahimsa. Similarly, I lose my energy by telling a lie. If I tell a lie, then I have to tell more lies to cover one lie, and all my energy in thinking, excessive thinking, loses my energy if I break the yama. Similarly, the asteya, if I steal and then there is a constant fear that I will be caught, that increases the speed of thought in the mind, and that doesn't allow your energies to go higher. And if your energies do not rise, you cannot grow in the path of Raj Yoga. So therefore, it has to be put a brake. A brake has to be put on that. In the same way, if we do not follow Brahmacharya, then we tend to lose energy in the form of increasing thoughts. So what is this thought about? What is this thought, and what is this loss of energy that takes place if the yama of Brahmacharya is broken? So looking at it through that point of view, it appears that the charya or the behavior that Patanjali wants us to do is something related to our sensory indulgences.
I will not restrict it only to the sexual organs, but it is overall to our sensory indulgences. See what happens in all others. There is another. In Asteya, if I break it, what I do? I steal something that belongs to another, taking it as mine. So in the same way, in Brahmacharya, I eat through my sense organs. I overeat through my sense organs. I take something that belongs to another, and that generates a guilt in me. That guilt increases the number of thoughts in the mind, and that doesn't allow you to settle down on the path of yoga. So this is the understanding that I see from Patanjali's Yoga Sutra. Let us look at Bhagavad Gita also. Krishna in the 17th chapter describes three kinds of tapa. He describes tapa means austerities. You have to do it at the level of the body, at the level of the mind, at the level of speech. Manasa, vacha, and sharira. He describes three kind of tapas. In the tapa at the level of the body, he describes brahmacharya. He describes ahimsa also at the level of the body. He describes shaucha also at the level of the body. Shaucha is actually a niyama. So he says, Daiva Dvij Guru Pradnya Pujanam, respect to the devas, to the gurus, to the knowledgeable people. Then following cleanliness, simplicity, brahmacharya, non-violence. These are all the tapas. Tapa means what? I generate heat within me by putting a brake on my animal instincts, So these are all the sharirik tapas. What this tapa does, it has a purifying effect. It produces a purifying effect. So, we are not going to any extremes here, but definitely there is a lifestyle that Krishna also tells, which is related. So brahmacharya is more related to the body and bodily behavior. This is what understanding that we get from these two texts. Brahmacharya word comes 3-4 times in Bhagavad Gita. Another time that it comes is in the shloka that we chanted in Yoga Nidra. He says that even if you want to prepare yourself for meditation, you have to sit in brahmachari vrate sthitaha. So brahmachari vrata, it means that all the sense organs are turned inwards. Okay, and if you're you want to sit in meditation and there is a craving for the sense pleasure, not only related to sex, but related to eating something, related to listening something, related to touching something, going somewhere, all those cravings will not allow your mind to settle down. So when brahmachari vrate sthitaha that comes, it means that Krishna wants us to come in such a state of mind where you are equanimous to all the sense pleasures, and you have turned yourself inwards. Similarly, in 8th chapter, again, this word brahmacharya comes. Yadaksharam veda vido vadanti vishanti yadyatayo vitaragaha yadichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshe. He says that him, the Uttama Purusha, the supreme consciousness, I am going to describe you about that supreme consciousness, for which to attain that state, great ascetics take the vow of brahmacharya and renounce the worldly pleasures to enter into that, that path I am briefly going to explain to you. So Krishna says that in Vedic parampara, people followed this brahmacharya, charanti, means followed this path of brahmacharya, the way of living of brahmacharya. And the objective of walking on this path was to reach the ultimate. As Gandhi sir was saying, to reach the Brahma also, this charya
or this path was required. What is that path? So I think in the whole Bhagavad Gita, for me, the understanding of the Brahmacharya that came closest, to give me the most clarity was this sloka in the 4th chapter. This sloka actually, if you see in Vedic Parampara, people chant it just before eating their meal. It is a bhojana mantra also. The mantra says, Brahmarpanam Brahma Havihi, Brahmagno Brahmanahutam, Brahmaiva Tena Gantavyam, Brahma Karma Samadhina. For those who are completely absorbed in God consciousness, in that Brahman consciousness, everything is Brahma. Then for them, the oblation, what they are offering is Brahma. It means, see, any action in your life is a yajna. Now I am talking to you is a yajna. So if I do this yajna in the consciousness that what I am offering to you, like what I am talking to you right now, what knowledge I have and I am telling you is Brahma, then Brahmagno, the Agni, it means your consciousness which is absorbing it, what I am giving to you is also Brahma. In that Brahmagni, I am offering my karma. Brahmana hutam. The ahuti is Brahma, the giver is also Brahma. Brahmaevatena gantavyam. Ultimately, what is the fruit of this kind of action? The fruit is also Brahma. The doer is Brahma, the receiver is Brahma, the act of doing is Brahma, the act of receiving is Brahma, and of a karma done in such a consciousness, the result is also Brahma consciousness. This way, this is called as Brahma Karma Samadhi. It means it is not, the karma will not give you the Shubh or Ashubh Phala. Generally, if the karma is done in a non-Brahma consciousness, me as a doer, me as the taker, me as the giver, then it is my karma. Then the result is pleasure or pain that I will receive in my life because of that karma. So generally 99% of our karmas end up giving us a good fruit or a bad fruit. But there is another way of doing the karma, which is known as karma in the Brahma Karma Samadhi way, where everything is Brahman, everything is only one, and one is playing in the one. There is literally no raga, no dvesha. There is no craving and no, desire to give, no attachment, no aversion. Raga dvesha viyuktastu vishayan indriyascharan atmavasher vidheyatma prasadam adhigacchati. Without any attachment and aversion, the sense organs dwell in self-subjects. And this doesn't give any pleasure or pain. In fact, it allows the deep ananda of the Atma to come forward. Is it possible to do karma in such a way? Is it possible to go through all the, bhogas that we have in our life, or whatever we give and take in our lives, in such a state of mind? Is it possible to do them? It is in this way that your whole dincharya becomes a brahmacharya. Everything I do is I am dwelling in Brahma. I am actually completely in touch with my consciousness, where we touch at the end of Yoga Nidra. In that consciousness, just when you wake up from Yoga Nidra, when you eat food, will you really eat? Will you feel the taste? No, the Brahma will just enter in Brahma. It will be just neutral. No matter how bad it is in the taste for you or how tasty it is, it will neither excite you nor make you agitated. It will just go into you as if what you are eating is you only. Everything is just one. This state of mind and the activities done in this state of mind
complete neutrality of the attachment and aversion in the sense organs. All our senses have this deep, they are ingrained with attachment to certain kind of sensations and aversion to certain kind of sensation. This is a cognitive way of neutralizing both by calling them Brahman. And not only the objects, but the very act of doing also. And when everything is Brahman, everything suddenly becomes of the same color. The different myriads of lights merge into one white light. Everything becomes one white light. And the yogis, without raga, dvesha, allows his senses to dwell in sense objects, completely holding his self inwards. Atma Vashir, Vidheyat. What is the result? Prasadam Madhigacchati. Atma Prasada starts coming forth. So a very beautiful path, very high level path. The very heart of the path of Raj Yoga. I wish and pray that all of us understand the essence of Brahmacharya and grow on this path of Brahmacharya. Namaste. Thank you very much. Please contemplate. Very important is that here there is Thank you, sir. There is no fight here with yourself. Everything is you. Namaste. मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर थोड़ा समय हो। कहिए सर। ब्रह्मचर्य को सामान्य अर्थों में जिस तरह देखते हैं तो इंद्रिय आग्रह की बात करते हैं और वीर्य संरक्षण की बात करते हैं। और मुझे एक अभी विचार आया, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था आप सबसे। कि आयुर्वेद में कहते हैं मांस, मज्जा, रक्त और वीर्य एक तरफ से लेते हैं, कहते हैं कि सेव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीर्य सेव करते हैं तो आप शारीरिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं। और मैं अभी थोड़े दिनों पहले स्टेम थ्योरी के बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ वो बताते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे जन्म के समय में होते हैं और वो शरीर के विभिन्न कर्मों के हिसाब से अलग अलग अंगों में परिवर्तित होते हैं, बढ़ते हैं। तो हमारे अब इस एज में भी, बड़े होने के बाद भी, वो स्टेम सेल्स कहीं शरीर में होते हैं जो अपने आप को वापस डेवलप कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर हमारा हाथ कट गया हो तो वापस ज्यों का त्यों आ जाएगा, बन जाएगा, या हमारा लीवर खराब हो गया हो तो नया आ जाएगा। तो बताते हैं कि वो हमारे मज्जा में होता है, क्या बोलते हैं उसे, बोन मैरो। हाँ, ये मैरो, बोन मैरो में होता है। तो वहां से भी हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ असल में ब्रह्मचर्य से इस अर्थ में कि जब आप वीर्य का संचयन करते हैं, यदि आप उसे सुरक्षित करते हैं, यदि आप उसे बचाते हैं, तो आगे जाकर वो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में, स्टेम सेल्स की वृद्धि में काम आता है। और अब तो साइंस और डेवलप कर रहा है, पर इंटरनली क्या होता है मुझे पता नहीं। शायद योगा वगैरह और अंदरूनी तौर पे, प्राकृतिक तौर पे कोई काम करता होगा। और एक और ख्याल आया कि हम जो इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं और उसमें चक्रों की बात करते हैं, तो भी कहते हैं कि काम को रोक करके राम तक पहुंचने की तरफ है, नीचे की तरफ शक्ति को जाने देने से बजाय हम ऊपर की तरफ देखें। तो योगा में भी ऐसा है ही कि आप नीचे के जो चक्र हैं उन सबों को एक तरफ से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ें और अंततः जो सहस्रार चक्र है वहाँ ब्रह्म की उपस्थिति को कहते हैं। तो आप असल में ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा ख्याल आ रहा था कि जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्मैव न परः, और डुअल थियरी की तरफ जब जाते हैं कि एक ब्रह्म है और एक माया है, तो माया जो है वो हमारे इंद्रियों से रिलेटेड चीजें हैं, काम है, वासना है, हम इंद्रिय निग्रह करते हैं और माया से मुक्त होते हैं, ब्रह्म की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद यही सब ब्रह्मचर्य है।
दिमाग में आ रहा था और मैं तो पीछे बोलने वाले छात्रों में से था। आपने मुझे पहले कर दिया, मैं सब थोड़ा विचार आ रहा है तो आप सबको शेयर करूं। ठीक है, धन्यवाद, यही कहना था। संजीव सर, हाँ। आपने जो आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू बताया वो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम सेल्स, दे से दैट they can grow in a hypoxic atmosphere. They are there in the bone marrow. जब हम योग करते करते समाधि में जाते हैं और हमारी सांसें रुक जाती है, when our breath stops, then the anaerobic atmosphere comes in. This is the atmosphere that was there when the fetus was in the womb of the mother. Then these stem cells actually can come out and circulate in the blood again. लेकिन जब तक ब्लड में ऑक्सीजन है, ये स्टेम सेल बोन मैरो में ही रहते हैं जहाँ पे लो ऑक्सीजन होता है। Connecting it here, I feel that when one is really in that Brahma consciousness, everything is one, then there is nowhere to go. I want nothing. I do nothing. I am complete. Then naturally the breath comes to a stoppage. And then the Brahmacharya at a sexual level also is effortless. So I always, tell my patients, they people come, with problems that, okay, I am addicted to masturbation, I cannot control myself, or pornography. I only tell them that when the storm comes, at that moment, you cannot fight, you will lose the battle. But when it is silent and serene, in the morning when you have woken up, when you have done the yoga session, जब आपने सुबह आपका मन शांत है, at that time you have to strengthen yourself by going deeper and deeper and holding on to the light. There is no point fighting with darkness, but holding on to the light longer and longer will prevent darkness from entering for that much time as you are holding the light. So channelize your energy towards holding the light, and you will not even know when, like your hair grew, you don't know. In the same way, when you came out of all these bad habits, you will not even realize. So इसलिए आप गिल्टी मत होइए, आपसे जो भी गलतियां होती हैं उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, उनको स्वप्न की तरह लीजिए, उनको ड्रीम की तरह लीजिए। लेकिन जब आप जागे हैं, जब आप अपने आत्म स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, तो जागिए और उसमें और गहरा उतरने का प्रयास कीजिए। उस समय अपने आप को और सुदृढ़ बनाइए और इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। नमस्ते। Thank you very Thank you, much, sir. sir. Beautiful session, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. We'll meet you next week. Tomorrow is a holiday, Muharram. Thank you.